तेलुगू एकता समितीच्या वतीने नीलम नगरात कष्टकरी महिलांचा भव्य मेळावा घेण्यात येऊन त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहण्याची ग्वाही देण्यात आली। तेलुगू भाषा एकता संघर्ष समितीच्या वतीनं नीलम नगरातील माता दुर्गादेवी मंगल कार्यालयात नुकताच डॉक्टर गोवर्धन सुंचू यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। या मेळाव्याचं उद्घाटन श्रीनिवास संगा यांच्या हस्ते करण्यात आलं। या प्रसंगी माजी नगरसेवक श्रीनिवास करले, माजी नगरसेविका सुजाता अकेन, वरलक्ष्मी पुरुड यांच्यासह व्यंकटेश रत्सा, तिप्पण्णा गणेरी, उपाध्यक्ष देविदास गुंडेटी, सहकार्याध्यक्ष अंबादास देवरे, सहसेक्रेटरी नागप्पा कामूर्ती, उपाध्यक्ष हनुमंतू सायबोळू, कार्याध्यक्ष रामुलू पोतू, शंकर द्यावरकोंडा, शारदा गुंडेटी, राजू झंपाल, भास्कर तमनूर आदींची उपस्थिती होती। दरम्यान या मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना श्रीनिवास संगा यांनी नीलम नगरात अनेक मुली आणि माता भगिनी कष्ट करून त्यांचं जीवन जगतात। त्यांना जीवन जगताना अनेक संकटांना सामोरं जावं लागतं। मुलींना शिक्षण घेताना देखील आर्थिक परिस्थिती नसल्यानं अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं। परिस्थिती हालाकीची असल्यामुळं आई वडिलांना मुलींचं शिक्षण पूर्ण करताना अनेक प्रकारचे कष्ट सहन करावे लागतात। दरम्यान या सर्व अडचणींवर मात करून अनेक मुली उच्च शिक्षण घेतात, मात्र या ठिकाणी नोकरी नसल्यामुळं आणि चांगले उद्योग नसल्यामुळं त्यांना इतर राज्यात नोकरी भाग पडतं। या पुढील काळात आपण माता भगिनींच्या पाठीशी आपल्या समितीच्या माध्यमातून खंबीरपणे उभं राहू अशी ग्वाही त्यांनी दिली। చెప్పలేని ఎన్నో దుఃఖాలున్నాయి, కానీ ఈ దుఃఖం కోసం ఎవరెవరికి ఏమేమి దుఃఖం ఉన్నది, ఏమేమి ఆలోచన ఉన్నది అని దానికోసం మేము ఏం చేస్తే అది మంచిగా ఉంటుంది। మాకు నేను మార్గదర్శనం ఇవ్వాలి। ఇప్పుడు ఇలా కూర్చున్న అందరిలో పట్ల ఎవరెవరకు ఏమేమి మన దుఃఖం ఉన్నది, ఏ దుఃఖాలకి మనం మీ దగ్గర దొంగయిస్తున్నాము, దానికి ఏం మార్గం చేస్తే బయటెళ్తాము, మీకు ఎట్లా సమాధానం అవుతుంది, మీ దాంట్లో ఎవరెవరో కనిపిస్తుంది వాళ్ళు వేసి మాకు చెప్పాలి। మీకు చెప్తేనే కాదు, మీరు మాకు ఎంతిచ్చినట్టు మాకు చూసింది, కానీ ఖర దుఃఖం మీకున్నది, మీ పరిచయం ఏంటో మీకే యొక్క మీరేం చేస్తే అది సుఖిస్తుంది, దాని గురించి మీరు మాకు మార్గదర్శనం చేయాలి। निमंत्रक डॉक्टर गोवर्धन सुंचू यांनी देखील नीलम नगर हा भाग श्रमिकांनी व्यापलेला आहे। या ठिकाणी कष्टकरी लोक जास्त प्रमाणात आहेत। गरिबांसाठी स्वर्गीय आशप्पा करली यांनी ही वसाहत निर्माण केली। त्यावेळी लोकांकडे पैसे नसताना देखील हप्ते देऊन त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली असं ते म्हणाले। या कष्टकरी वर्गासोबत पुढील काळात तेलुगू भाषिक एकता संघर्ष समिती खंबीरपणे उभे राहील अशी ग्वाही त्यांनी दिली। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सतीश दासरे, शारदा गुंडेटी, सविता गादास, विष्णू गुंडेटी, तिमप्पा मादगुंडी, सतीश गोरंटला, सोमनाथ कनकी, दामोदर एलदी, नागनाथ संगा आदींनी परिश्रम घेतलं। सूत्रसंचालन बालाजी श्रीचिप्पा यांनी केलं तर आभार तिप्पण्णा गणेरी यांनी मांडले।